بالعصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. So we should understand how World Wildlife Day came to this stage and why we are celebrating this day. This day was actually December 2013, first time in COP of CITES, which was held in Bangkok. It was decided that the day of adoption of the CITES shall be celebrated as a wildlife day internationally to raise awareness, raise issues of wildlife degradation, raise issues on other concern of the wildlife habitat degradation and its depredation, losses of biodiversity. So all these issues are to be highlighted internationally so that it get a significance and the people are get aware about its importance. So that since for the first time in 2010 the Wildlife Day was celebrated, and since then every year with different themes this day is celebrated. For this year the theme of the day is written just here: conserving medicinal and aromatic plants, conserving health, heritage and livelihoods. So this day is today's day is important in terms of the role of medicinal plants in our health, how medicinal plants play their role in the medicinal industry, and how these wild plants are important in the industry of aroma. So here today the medicinal plants, the Directorate of Non-Timber Forest Product has also put some display of the medicinal plants and products being derived from the medicinal plants on display, demonstrating the importance and use of these medicinal plants. Together to celebrate the rich diversity of life on earth and to raise awareness about the urgent need to conserve biodiversity. This day was officially recognized by the United Nations to raise global awareness about wildlife conservation. This year's theme, medicinal and aromatic plants, conserving health, heritage and livelihood, highlights the critical role these plants play in sustaining human health, cultural heritage and local livelihoods. As we mark this important day, let's acknowledge the significant contributions of wildlife to our ecosystems, economies and well-being. From providing food and medicine, खात्मा पूरी निज़ाम को हिला कर रख देता है। मगर अफसोस कि आज गैर कानूनी शिकार, जंगलात की कटाव और मौसमियाती तब्दीली ने जंगली हयात को शदीद खतरे से दोचार किया है। यह सवाल पैदा होता है कि क्या नौजवान जंगली हयात की तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ कर सकता है? जी हाँ, 5% डर गए हो पदी की 95% नूर सजुनी लका पदी किसी दी सर पदी की ज़ीली दी अगर मेडिसिनल वैल्यू दा पदी की बार्क ते अगर दंदासा दा अगर मेडिसिनल वैल्यू दा पदी की गुल दे अगर बनबशा दा पदी की मेवा दा अगर मेडिसिनल दा पदी की कबूशिस दी कबदी की लांदी ह्यूमस ते कबदी की सदी दा टोल एनटीपी डायरेक्टेड दा डायरेक्टरेट दे लپاره جوړ شوی دی چې ډپارټمنټ باندې برډن کم شي او خلکو ته اکنامیکل سوشل اکنامیکل روزګار میلو شي. चीता, चकोर, तीतर और ये चीज़ें हमारे जहन में आ जाती हैं। हालांकि अगर हम डिफिनीशन को देखें तो ऑल अनडोमेस्टिकेटेड प्लांट्स, एनिमल, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट लिव नेचुरली इन नेचुरल एनवायरनमेंट। तो वाइल्ड लाइफ का टर्म बहुत ब्रॉड है, इसमें जितने भी लाइफ फॉर्म हैं जो डोमेस्टिकेटेड नहीं है वो सारे आ जाते हैं। तो एक
तो डिफिनीशन के हवाले से मैंने कहा मैं बात करूं कि ये जो थीम है इससे इंशाल्लाह बहुत सारे लोगों को जो वाइल्ड लाइफ का स्प्रेड है, जो एक्सटेंट ऑफ द टॉपिक है, वो क्लियर हो जाएगा और ये फ्यूचर में काम आएगा. Can conserve it and how it will affect our livelihood. Why I am starting from Churchill? It's not because he was the British Prime Minister. Remember, he wrote a book. Anyone who knows the name of that book? That was the story of Malakand Field Force. What's the name of the book? Students, what's the name of that book? The story of Malakand Field Force. When Churchill was a young guy, he started his career from that packet across the road near Chaktara Fort. And the biodiversity of Malakand Wildlife Division, then the administrative setup and hierarchical set of Malakand Wildlife Division, and the conservation and development initiatives which we have done in Malakand Wildlife Division, the major functions of Wildlife Department in my division, and the ongoing activities which we are doing in Malakand Wildlife Division, and the major issues and constraints in Malakand Wildlife Division. Next. Basically, the Malakand Wildlife Division was established back in 2007 as an independent wildlife division, and which is spread on Malakand district, comprises on 952 square kilometer of area, and it has 3 ranges, namely Batkhela Wildlife Range, Dargai Wildlife Range, and Malakand Wildlife Safari Park Range. Geographically जब हम बात करते हैं तो जो मालाकंड वाइल्ड डिवीजन है वो ऑन द नॉर्थ लोअर दीर डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड है, ईस्ट वाली साइड पे सवात एंड बोनेर डिस्ट्रिक्ट इसको टच करते हैं, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट में मर्दान एंड चरसदा डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और वेस्ट में बाजौड़ और मोहम्मद डिस्ट्रिक्ट जो है वो लाइज करते हैं. बेसिकली मालाकंड वाइल्ड डिवीजन एक जो उसका टोपोग्राफी है वो माउंटेनियस एरियाज़ है, उस पर प्लेन एरियाज़ भी हैं, माउंटेनियस एरियाज़ भी हैं, एक्वेटिक लैंड्स भी हैं, और रेंजेस जो उसकी एलिवेशन है वो रेंज फ्रॉम फुट हिल्स ऑफ हिंदू कुश माउंटेन टू नदरन एज ऑफ पेशावर बेसन, जो कि एक प्लेटो है, एक जो मैदान है उसके साथ है. टेम्परेचर 4 डिग्री टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर रहता है. रेनफॉल जो है वो 740 mm टू 1450 mm मालाकंड वाइल्ड डिवीजन में रिकॉर्डेड की गई है, और टोपोग्राफी जो है वो एवरेज एलिवेशन उसकी 733 मीटर्स अबव सी लेवल. दुनिया की जो है वो मास लेवल पे प्लांटेशन की गई है, और इसका भी अपना एक मकसद था, एक अपना एक वो था. फाइनल डाइवर्सिटी में कॉमन लेपर्ड है, रसस मंकी, ग्रे गोराल पाया जाता है, रेड फॉक्स है, गोल्डन जैकल है, इंडियन पेंगोलिन यहाँ पे है, चकोर पार्ट्रेज, ग्रे पार्ट्रेज, ब्लैक पार्ट्रेज, और सम जो है वो जो वाटर बर्ड्स हैं जो माइग्रेटरी रूट्स में वो हिस्सा है, वो हमारी मेजर जो है वो फाइनल डाइवर्सिटी है.